हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? क्या हाल है आप सभी के? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में जो भी स्पीड बैच वाले हैं, यू कैन राइट एस, एस फॉर स्पीड बैच, एस फॉर स्पीड, एंड दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास यू कैन राइट पी इन द चैट बॉक्स। चलिए जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है? एंड वी शैल बिगिन आवर डिक्टेशन। Okay, Chahat is there, Gauri is there, great. चलो, आई गेस बाकी लोग भी आते रहेंगे एक एक करके। एंड दिस इज अनदर वीक, दिस वीक व्हाट विल बी डूइंग, हम लोग कैलाश चंद्रा डिक्टेशन से चालू करेंगे, ठीक है। टुडे विल बी डूइंग केसी वॉल्यूम नंबर 5, ओके, एंड ट्रांसक्रिप्शन नंबर 103, ठीक है। वॉल्यूम नंबर 5 एज यू ऑल नो 1000 वर्ड्स का है, 1000 वर्ड्स है इसमें। 1000 वर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 85 to 90 वर्ड्स पर मिनट हम करने वाले हैं लाइव क्लास में। बाकी जो भी स्पीड बैच में है, यू विल गेट द डिक्टेशन अपलोडेड ऑन योर आईडी, जहां पर आप डिक्टेशन का स्पीड चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, एंड उसी के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए लेट्स गेट रेडी गाइस। Okay, we are back again live. Guys, just give me confirmation that can you hear my sound? My sound is clear, तो C टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। If the sound is clear, we can start the dictation. ठीक है, थोड़ा बीच में आई थिंक थोड़ा नेट का इशू हो गया था। एंड देयर इज अ करेक्शन, वी विल बी डूइंग वॉल्यूम नंबर 104, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 104, बिकॉज 103 हमने पिछले लास्ट वीक हमने खत्म कर दिया था इन द स्पीड बैच, ओके। सो विल बी डूइंग दिस डिक्टेशन, ओके। आई थिंक 2 ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है शायद चैनल को, चाहत एंड गौरी, तो इसीलिए आज शायद इन्हीं लोग की चैट दिख रही है, ओके। तो रोहित आशीष ऑल्सो हियर, ग्रेट। तो ये जो चैट है आज लाइव क्लास की, यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको दिख रहा होगा, ओनली सब्सक्राइबर्स ऑफ द चैनल जो हैं वो लोग चैट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो सिर्फ आते हैं डिक्टेशन लेके चले जाते हैं, आप लोग चैट नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू बिकम सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 मिनट का वेट कर लीजिए, मतलब एक डिक्टेशन लिख लो, ठीक है। चलिए गेट रेडी गाइज फॉर द डिक्टेशन। ट्रांसक्रिप्शन नंबर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 104 हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 104, ओके। चलो सेव कर दिया। सर 2 मैटर इज इनफ इन अ डे, आप परफॉर्म कीजिए ना उन मैटर्स में, आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस 90% से ऊपर है इन मैटर्स में, देन यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। और आप वैरायटी देखिए ना, ये नहीं कि आप 2 मैटर मैंने बोल दिया, आप 2 मैटर सिर्फ केसी के लिखते जा रहे हो, आपको वैरायटी देखनी पड़ेगी। दैट यू हैव टू डू एनसीईआरटी, केसी, प्रेसिडेंट स्पीच, प्राइम मिनिस्टर स्पीच, देन एडिटोरियल, देन जनरल मैटर्स, एवरीथिंग उसमें आपको लेके आना पड़ेगा, देन यू कैन से 2 मैटर्स इनफ फॉर द डे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ केसी किया और बोला 2 मैटर में काम हो जाएगा, कि नहीं, यू हैव टू सी एवरीथिंग, ओके। चलिए guys, get ready for the dictation. Dictation starts in 5 seconds. Please be ready everyone. Ready? Steno School KC transcription 3 2 1 start. In recent months we have seen how speculation took place in regard to certain foodstuffs and other agricultural commodities. The Reserve Bank bulletins issued recently tell us that lots of money were advanced by a number of scheduled banks
in order to back up the speculative operations and buyings of certain concerns. Similarly, monies had been advanced for speculative purchasing with regard to other commodities. Such things are happening, but the point is that these speculations go on merrily in this country, supported by those very elements who control the stock exchange and the financial world of our country. I should like to know to what extent this is going to be stopped. It is said that we are in a bad situation, and in order to give a proper direction to the planned development of the country, it is essential to direct the investments and speculative investments in particular. How much this measure conforms to these, I should like to know from the government. It appears to me that not very much will have come out of this measure, notwithstanding the fact that government is armed with these powers. It is of vital importance today that we should have proper control of our investments that are taking place, or cornering of shares in some cases. If we are at all serious about the planned development of our economy in general, and our industry and commerce in particular, I am afraid the powers that are being taken by the government under this bill are not at all sufficient for ensuring such developments as would enable the government to direct investment and control transfer of shares, etc., in conformity with the interests of planned economic development. This is what I find from the reading of this bill, and even from hearing the speech that has been delivered by the Honorable Minister. I have also read the other speech he made in the other house. What that does not throw much light on the subject. I am not surprised, because the whole thing was being discussed and mooted by the government. The approach of the government suffered from certain deficiencies. That is to say, they were not so much keen on suppressing wholesale the speculative operations as on getting a certain measure of control over them. Today, the time has come for making up one's mind with regard to the speculation business as a whole. This is the most important thing. With regard to investment, it has been said very eloquently in these documents that after all, a person
should have an opportunity of investing his funds, and therefore he should have a chance of going to the market and buying some shares. I can understand it, but what is the protection against his being cheated by certain people who have taken command of the stock exchange? What is the guarantee against that? Blank transfer is there, it is not. Forward trading is there. Contract is provided for. It is not abolished. Also, there are other ways and means of cheating the common man. As we find today, the common man goes in for investment. Very genuinely, he goes in for investing because he wants to save some money for bad days. Now, what is the protection in this bill which would save his money? I find that there is no such effective guarantee. I should have thought that in considering this whole scheme of measures, the government would be interested in seeing as to how the heart of speculative operation could be crushed, namely the monopolists who control the stock exchange today. It is essential to hound them out of the field altogether. In Kolkata, they not only put up an outward show, but they have built underworld. And I suppose that underworld exists even today. A police raid took place. Telephone system and the whole paraphernalia was discovered, which showed that certain big men in the stock exchanges were carrying on subterranean business. This is a new type of underworld we have in our country in order to cheat the common man, in order to evade taxes, in order to carry on profiteering and black market trades. Lots of things came to light that day, and the newspapers gave a lot of publicity. We came across certain very big people. Some of them are very well known patrons of the Congress party, the ruling party, who were hauled up in this fashion. What has happened to them? We would like to know when we discuss such a measure. They are the kings in the speculation world. They are the tycoons of that field. I would like to know what has happened to such people. What are you going to do with these speculators? Will they be allowed to operate openly or secretly in the field under this fashion, or are you really thinking of taking some action against them, not merely for apprehending those people who have gone underground and started underground business in this manner, but also the possible recruits to that underworld? I would like to know. This is what the government should tell us. It is no use trying to bring in all technical questions, explaining one clause after another. This is important, but what we would like to know from the government is how you are going to check these elements who sit
on top of the country as far as the stock exchange is concerned. These are very big and powerful people, and they need to be suppressed with a heavy hand in the interests of our economy. I find the Honorable Minister piloting this bill is completely indifferent to that aspect of the matter. There have been cases where a person, a speculator so to say, goes in for heavy purchases at one time. The heavy pressure boosts up the prices. Then he starts selling it, thereby realizing the money he had spent for buying certain shares in the market. Full stop. All right, guys, how was this dictation? You can tell me your percentage of attempt. कितना परसेंट मैटर लिखा आपने? $84 WPM की स्पीड थी इस डिक्टेशन की. So the speed was less. I hope you all have performed great. Okay. Gauri around 70 to 75. Achal 95. Aditya 92. Shinjini 97. Great. Chahat 70. Okay. फीस थोड़ा कम कीजिए, 1200 बहुत होते हैं. ओके ठीक है, आप टीम से बात कर लीजिए. जब कोई ऑफर आएगा देन यू कैन एनरोल दैट टाइम. ठीक है, आपके लिए बहुत फीस है तो फिर मे भी शायद आप कोई कुछ हिसाब किताब देख लीजिए क्या बोले इसके बारे में, जो है वो है. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल फॉर today's live class. If you guys have any doubt, you can type in the chat box and we will wind up the session. Alright, so most of your doubts, since it's solved in the Google Meet class itself, बाकी जिसको डाउट है you can use the comment section of this class जब अभी अपलोड हो जाएगी 2 मिनट में. एंड सिंस दिस वॉल्यूम नंबर 5 तो आपके पास में इसका ट्रांसक्रिप्शन के नोट्स भी है, सो यू कैन रेफर देयर. एंड एक डिक्टेशन को रिपीट किया करो. ठीक है, 2 बार 3 बार रिपीट करना होता है, तब जाके आपका थोड़ा थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा. ठीक है, फर्स्ट टाइम इफ़ यू थिंक कि इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं, नहीं होता है. यूजुअली आपको 1 बार 2 बार 3 बार डिक्टेशन लिखना पड़ता है, तब जाके आपको, जैसे इन्होंने पूछा न्यू वर्ड्स कैसे टैकल करें, न्यू वर्ड्स आपको आएंगे डिक्टेशन में, आपको उनको छोड़ देना है. जब डिक्टेशन आप लिखोगे देन यू हैव टू लीव दोज वर्ड्स. ठीक है, 1 या 2 वर्ड्स आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रादर देन जब आप एक एक वर्ड को पकड़ने के चक्कर में आप बाकी ईजी वर्ड्स जो उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म्स है, ग्राम लॉग्स हैं, उनको आप छोड़ दोगे. अगर आपने टू द ये 2 वर्ड्स भी छोड़े तब भी आपके 2 फुल मार्क्स जाएंगे. और आपने एक कोई बड़ा वर्ड, ठीक है, जैसे साइकोलॉजी जैसा बड़ा वर्ड भी स्किप किया तब भी आपके 1 ही मार्क्स जाएगा. तो वो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है.
ठीक है। एग्जाम में जब आएगा तो उसके पहले आपको इतने वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेनी है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू आर यूज टू लिखने के लिए, ठीक है। और जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे वो मैक्सिमम लोगों को वही वर्ड्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैटर में डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो मैटर को रिपीट किया करो, एक बार जब न्यू वर्ड आए उसके बाद में उसको तुरंत प्रैक्टिस करो, सो दैट वो लास्ट टाइम आपके लिए न्यू वर्ड बन जाए। उसके बाद में आपको उसके आउटलाइन आ जाए, आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि उसके बाद कभी भी वो आपके लिए न्यू वर्ड जैसा नहीं रहे, ठीक है। लाइक आई सेड लास्ट में, ठीक है, कि एग्जाम में बहुत ही मिनिमल, मतलब एकदम थोड़े से ही आपके लिए ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप नहीं लिख पाओगे, और वो जो आप नहीं लिख पाओगे मैक्सिमम लोग उसको नहीं लिख पाएंगे उन वर्ड्स को, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जाम में मिस्टेक्स के लिए अलाउड किया जाता है, ठीक है, कि आपको 10% मिस्टेक्स अलाउड होती है, ठीक है, या 7% या 5%, जिस भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो उसके हिसाब से डिवाइड रहता है। तो आपको उसके हिसाब से उनको टैकल करना है। उसके पहले आपको मैक्सिमम की प्रैक्टिस कर लेनी है अभी यहीं पर, कि हर टाइप के डिक्टेशन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको पता है कि आप जैसे इस यहाँ पे आप टैकल कर रहे हो उसी तरह से आप एग्जाम में भी टैकल करने वाले होने, ठीक है। स्किल टेस्ट तो पहले रिजल्ट तो आए उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा ना। रिजल्ट देखिए बहुत जल्द आने के चांसेस हैं, पहले रिजल्ट आए उसके बाद में स्किल टेस्ट का डेट आएगा, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज क्लास, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट स्पीड बैच।